Hello students, welcome back class 7 chapter 11 part 1 transportation and excretion. In this chapter student we will discuss about transportation of various substances in living organism. Why there is need of transport? Because for example the oxygen goes into the lungs but it is required by the all cells of the body. So there is need of a system which can transport these materials from one place to another place. In human beings, there is a special type of system known as circulatory system which help in transportation of the material. In this part, we will discuss about the circulatory system in human being, blood, components of blood and blood vessels. Let's start part 1. Transportation of substances in animals. In unicellular organisms such as amoeba and paramecium, the transportation of materials take place through diffusion within the cell. Dear students, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से उनकी बॉडी बनी होती है, तो उनकी बॉडी में जो मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है सेल के अंदर. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. डियर स्टूडेंट, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं. So our body required a special type of system that is known as circulatory system which help in transport of various material. It transport the nutrient and other substances to different part of body. And this circulatory system transport the respiratory gases in the body. It also help in removal of waste product from the body. The circulatory system consists of three major components: blood, heart and blood vessels. हमारे circulatory system के main component क्या हैं? Blood, heart and blood vessels. Blood. It is a red color liquid which circulate throughout in our body. There are two main components of blood: blood plasma and blood cells. One by one we will discuss all these two in detail. First, blood plasma. What is blood plasma? It is a colorless liquid consisting 90% of water and 10% of minerals such as sodium, potassium, calcium and dissolved foods and waste material. All these are present in blood plasma. Blood cells. Dear student, there are basically three different type of blood cells are present: red blood cells, white blood cells and platelets. Red blood cells, these are red in color due to the presence of pigments called hemoglobin. They are spherical in shape and they help in transport of oxygen. रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ही ब्लड का कलर रेड होता है एंड दैट्स वाई वी कॉल दिस सेल्स रेड ब्लड सेल्स. एंड दिस सेल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइन विद hemoglobin and make oxyhemoglobin and transport the oxygen from lungs to various parts or various cells of body. Second type of cells which are present in the blood is white blood cells. They are colorless cells. They help our body to fight against the disease and infection. Student, in diagram you can see RBC, WBC, these are present showing in the diagram. Platelets. They are smallest blood cells inside the body, or we can also say that the platelets are the fragments of cells. Their main function is to help in blood clotting. What is blood clotting, dear student? If due to some injury there is cut in your skin, then blood come out from that part and these blood platelets help to clot the blood. आप देखते हो कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे डार्क कलर का क्लॉट्स बन जाता है स्किन पे, तो वो किस वजह से बनता है? ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट करने में ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. ये हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है सो दैट वो आवर ब्लड will not be wasted or flow out from the body. Blood vessels. There are three kinds of blood vessels present in our body.
arteries, veins and capillaries. Arteries, these blood vessels carry oxygenated blood from heart to different parts of body. जो आर्टरीज होती हैं डियर स्टूडेंट्स, उन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कैरी करती है और बॉडी के सभी ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल एंड दे लाई डीप इनसाइड आवर स्किन. जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी की स्किन में डीप होती हैं और हमें आउटसाइड से विजिबल नहीं होती. Capillaries, they are extremely thin blood vessels which connect arteries and veins. Capillaries क्या होती हैं डियर स्टूडेंट? ये बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको. आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं दैट इज नोन एज कैपिलरीज. देयर वॉल्स इज वेरी थिन. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटीरियल. स्टूडेंट्स, जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज और वेन्स, वो टिश्यू से या सेल से मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि उनकी वॉल्स थिक होती है. बट कैपिलरीज हेल्प टू एब्जॉर्ब द मटेरियल फ्रॉम द सेल्स बिकॉज ऑफ देयर थिन वॉल. The various dissolved substances passes into the body cells through thin walls of capillaries. जो कैपिलरीज की थिन वॉल्स होती है उसी से जो सेल्स का सब्सटेंस होता है, जैसे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है तो कैपिलरीज की हेल्प से फूड एब्जॉर्ब होगा ब्लड में. लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है तो कैपिलरीज की वॉल्स हेल्प करेंगी गैसेस को एब्जॉर्ब करने में. In this way, the thin wall of capillaries help in absorption of various material. Student, let's recall the topic that we discussed till now. First of all, we discuss the transportation of substance in animal, unicellular animal like amoeba and paramecium. In these animals, the transportation take place by the diffusion method through cell membrane. Then we discuss the circulatory system in human being. In human being, the circulatory system consists of main three components: blood, blood vessels and heart. Then we discuss the blood. What is blood? It is a red color liquid that flow in our blood vessels. Then we discuss the components of blood. Blood contains plasma, blood cells. Blood cells are basically of three types: red blood cells, white blood cells and blood platelets. We discuss about the function of each type of blood cells. Then we discuss the blood vessels. There are mainly three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. One by one we discuss all this. Arteries carries oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood, and capillaries, they are very thin blood vessels which help in absorption of substances from the cells. Rest of the topic, students, we will discuss in part 2. Have a nice day.